Good morning, students. Today is the last session of accounts, and we are going to start with issue of debentures remaining problems. But before that, some techniques. So in last session, in first 10 to 15 minutes, I will tell you some planning of your account subject, and after that, we can finish this issue of debentures because less problems are remaining. I just want to finish the concept of TDS in case of interest, and last one is a forfeiture of shares. Some problems are there which are still not covered, and you need some practice for forfeiture, so that problems will take it at the end. But before that, I will give you some strategies for your success. So sir, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि now we are going to finish with the syllabus. So now how to complete our targets for account subject. Other subjects, I will guide you what to do daily on daily basis, but actually I will tell you about account subject. चलो तो ठीक है. So जल्दी से आज का सेशन रेडी करने के पहले हम लोग स्ट्रेटेजीज बना लेते कि सर नेक्स्ट 2 months में what is actually my planning to pass my exam. Sir, success is only 25% in last batch. So last November, sorry, May students, only 25% was the result. And what are the reasons for 75% students, that those who failed in coaching, in classes or something in CA course? Why there is, difference of 75% and 25% ka ratio in CA course? Number one, lack of consistency. Number one, lack of consistency. Sir, students are not consistent from day one. It's okay, but now only 2 months are remaining. First, you should do ABC analysis of your subject. Sir, what is ABC analysis? It's okay, sir. Now I started with these sessions. I already watched bill of exchange. I already watched depreciation. I already watched inventory. But I'm not doing practice regular. Sir, when I started company accounts, I forgot inventory valuation. Sir, I forgot depreciation. And therefore, you have to maintain notebook for last day revision. Maintain notebook for last day revision. So if you read 50 pages, students who are genius, they can remember 15 pages out of this. 50 mein se, they focus on only 15 pages which are important. And average students, they can recall only 5 pages. So this is the difference between average student and genius. And genius students know exactly what they are targeting. Average students think this is also important. ये line भी important है, ये line भी important है. They cannot, understand exact sentence which is required. If you read 35 lines or 1 page, okay, if you read 1 page, out of that, you have to mark only 5 to 6 lines which are important. I have seen some students. Now, example, I will show you what is the example. Now, if you read this introduction, now introduction part, nothing is important in this. It is just a guidance for your subject. Now, for example, in these earlier units of this chapter, we have studied the issue of shares as well as capital as a means of raising funds for financing the business activity. So equity is a finance mode that we are aware. But with the increasing and ever-growing needs of the corporate expansion and growth, equity source of financing is not sufficient. Hence, corporate turns to debt financing through various means. Now, debt finance, this is a new word. Issuing debt instruments by offering for the same for the public subscription is one of the source of finance. So you can underline only debt, one of the source of finance. Okay. Debt financing does not only helps in reducing the cost. So reducing the cost and helps in
appropriate capital structure. So reducing costs, sir, how it reduces cost? Because equity shareholder, now here you will need a guidance of faculty. Here you will need the guidance of faculty. Sir, what is reducing cost? Reducing cost, it means, suppose if I am taking loan, I am a company and I am taking a loan from the public. I am getting interest rate at 12%. But equity shareholder, he expects 20%. Why he expects 20%? Owners, because owners always expects high. And owners expect high, therefore company's cost is also high because company has to give that return to owners. But at the same time, debenture holders are getting only 12% interest, so it reduces cost. So from the angle of company, only 12% they have to pay. And from the angle of shareholder, yes, from the angle of company, to pay to debenture holder is only 12%. And to pay to shareholder is 20%. So which is costlier to them? Equity is costlier to them as compared to debt. So here you need a guidance. Why, sir, it reduces cost? And that is only the thing you can mark it. So reduces cost and appropriate capital structure. Now see, out of 8 lines, 7, 8 lines, you only mark those important points which you have to retain in your mind. So next time when you study, you will recall this topic by only reading that underline points. And students here, they make mistake. Now some students, how they study? Better they study like in the earlier unit. They just underline it. All lines, they are not getting what they are doing. They just वो underline करते रहते हैं. बस एक खाली अपना book पढ़ा ये बताना है. So first, whenever you are reading any paragraph, first read it carefully. And then you have to pick those 2 sentences which are important out of these 8 lines. This is the target. And here students are not doing it properly. And that is only the reason students are getting failure. यही तो गलती है, lack of consistency. So daily, if you read 5 pages also for law, you can complete your syllabus within 1.5 months. Daily 5 pages. Daily 5 pages. Sunday को छोड़ दो. I am telling about only you have to work for 6 days, 7 days only for revision. So next target is for 6 days. 6 days is your daily target. 1 day compulsory revision. And here average student lags. He is not revising it on time. And merit rankers, they revise it on time. That is only the difference of merit ranker and normal students. I have seen my merit ranker students. They are very punctual for their targets. They are, targeting. They know exactly where they want to go. An average student, he doesn't know where he has to. Sir, average हो कोई दिक्कत नहीं है. ये कोर्स भी एवरेज स्टूडेंट के लिए बना हुआ है. सब 50 ही मेरिट रैंकर्स है भाई. 50 के नीचे जो बाकी के स्टूडेंट्स है वो एवरेज है. बट एवरेज स्टूडेंट को भी कैसे, ये हमें 75% में नहीं जाना है, हमें 25% में जाना है. वी हैव टू मूव टू 25%. इसमें से हार्डली 2% आर वेरी इंटेलिजेंट, 23% आर एवरेज एंड 75% आर बिलो एवरेज. They are intelligent also, but they are not working in the proper direction. And that is only the reason for failure. Sir, 2 महीने मेहनत करनी है. Only 2 months you have to work hard. ये 2 months, once you clear your foundation, I am telling you, it's nothing difficult in foundation. Foundation में just you have to focus on your targets. I say is not going to play with your intelligent mind, beta. नहीं. At foundation level, they are required. It's a basic knowledge, not advanced knowledge. Expertise knowledge, you will need it in the CA final. Advanced knowledge, you will need it at the inter. ICA won't change figures, won't change questions. They will change only figures at foundation level. 60 to 70% paper, you will find it from the study material. Same questions, only change in the figures at foundation level. Inter level, you might feel some different questions also. But if you study properly, last 10 to 12, 15 papers, you are not going to fail in the foundation. Believe me, mark it today. If you study thoroughly from your study material, what happens? Suppose आपको यहाँ का lecture समझ में नहीं आया,
तो आप और अलग अलग फैकल्टीज ट्राई करते हो. देयर आर एन नंबर ऑफ फैकल्टीज इन द मार्केट हु आर प्रोवाइडिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड व्हाट दे टेक, ये दे आर टेकिंग ओनली सिंपल सिंपल क्वेश्चंस. एंड फिर आप क्या करते हो, आप छोड़ देते हो आईसीआई मटेरियल. यू फोकस ऑन देयर मटेरियल which is extracted from the ICI material. But still, you are not focusing what is given by the ICI, and that is only the reason for your failure. You focus only on 2 plus 2 question, and ICI is asking you 29 into 7. 2 plus 2 anyone can answer. क्लास में पूरा समझ में आता है सर, बट एग्जाम में क्या होता है, फेल्योर इज ओनली बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन 29 into 7. यू आर फोकसिंग ओनली ऑन 2 plus 2, एंड एग्जाम में आता है 29 into 7 बिकॉज you have not studied from the study material. So friends, your Bible, your Quran, your Bhagavad Gita is your study material. Remember this. Even for law, I have seen law study material day before yesterday. At my time, there were no, proper provisions. Now ICA has given it properly. All I have seen it. In mathematics also, you study your questions, MCQ type questions, to ABC analysis. Yes, now come to this point. Sir, what is ABC analysis? See past examination question papers. Normally, ICI is asking in mathematics, they will ask you because in CA final, you will need present value, future value. So that's why ICI will focus 5 to 6 marks. They will ask you for present value and future value. Suppose present value, future value, statistics. So do it. Suppose you are weak in maths, it's derivatives is not cup of my is not tea, ye mera nahi hai cup. Okay, so in that case, you please ignore that topic. In that case, it's okay, 20 marks ka attempt nahi kiya, but whatever you are planning, 80 marks must be perfect planning. So that analysis you have to do. What ICI focuses on and what is C category. C category, either it's very difficult or better it's very easy. That is a C category. You can use your mind to solve that question. It's a C category question. We have done it in our illustrations also. So ABC analysis is very, very important in your life. Suppose if I'm getting good clients and I'm getting a good money from that, so I should focus on that. That is my A category. B category, suppose if my batch size is better 100 to 50 students, and I want to focus on that, so better that is a B category. C category, I'm not getting that money. Suppose if I'm doing another business and from that I'm earning only extra income, I will not focus on that business. It is just an investment. So that is my life ka ABC analysis. And in your CA life also, in your career, always focus on ABC analysis. C category is always better your social media and all that where you are getting attracted. So that is a C category. But A category is main your study beta. But you are not focusing on your A category. You are focusing on C category, and that is only the problem of your life. You are not getting exactly what you want the results. Results are important at the end. So do it properly. Notebook has to be maintained. Last day revision notes. Then beta 6 days plus 1 day revision. Divide your targets, 4 subjects. Now for next 2 months, divide your targets. Sir, mathematics I'm getting difficult. So beta please devote 3 hours for mathematics. Sir, accounts I need practice. Give 3 hours for practice. The law 4 days in a week for 2 hours. And English 2 hours for 2 days. 2 hours. It is 4 days. And Eco BCK, sir, now focus on this subject because this is MCQ based. It will give you 85 marks also. Solve each and every question. Wherever you are getting MCQs, please try it. Read one by one line of your study material. 85 marks, keep target 85 marks. And if you are average student, keep target at least 50 marks. At least 50 marks. So this is ABC analysis. Main is Eco plus BCK. It will give me 85 marks. It will give me proper 200 का target set करने के लिए. That is the main subject for me, Eco BCK. I will do each and every MCQ minimum 3 times. If I'm getting a wrong MCQ, I will note down it somewhere. I will note down it somewhere. I will ask my parent. Ask me any question out of these 100 questions.
It is very easy for them also. पेरेंट लोगों ने भी एमसीक्यू पढ़ा, यू हैव टू गिव दैट आंसर टू देम, इन्वॉल्व देम इन योर स्टडी. इफ दे आर गेटिंग, ये सिर्फ एमसीक्यू, चलो मम्मी ये बता दो, ये एमसीक्यू है, आप सिर्फ मुझे ऑप्शन दीजिए एंड आई विल टेल यू द आंसर. इफ योर पेरेंट आर नॉट इंटरेस्टेड, आस्क टू योर फ्रेंड्स, सेकंड कैटेगरी बेटा, एंड देन यू कैन डू बाय योर ओन ऑल्सो. सपोज नो वन इज देयर इन योर लाइफ, ओके, फ्रेंड्स को दे दीजिए, मम्मी पापा को दे दीजिए, एमसीक्यूज है तो. So eco and BCK daily 2 hours revision, half an hour, 1.5 hour reading thoroughly each and every MCQ solving. Law and English, write 3 questions daily, only 3 questions and answers. Daily write it thoroughly. 3 questions like your exam. Daily 3 questions means at the end of 1.5 month, you finished with almost 45 or 40 into 3, 120 question answers. Beta, 120 question answers is a big task. Accounts. Now I will come to accounts in my subject. Okay, wait. But first I have to give your analysis of the day. Sir, 3 plus 3, 6 plus 2 plus 2 means you are studying daily 10 hours minimum side. And after that, practice for all subjects. Sir, 16 hours are available to you. Out of this, I will delete 2 hours. So minimum you have to work for 14 hours. But I'm telling you to work only for 10 hours. Minimum 10 hours. You do not have option in this course. 10 hours for next 2 months will give you 100% results. और वो भी ऐसे रिजल्ट्स कि मैं स्टडी मटेरियल पढ़ेगा. आई वोंट स्टडी एनी अदर मटेरियल अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल. रिमेंबर सर, मोटिवेशन देना कुछ नहीं होता है, मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए. ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूं, मैं आपको मोटिवेशन दे सकता हूं, बट आफ्टर 2 hours इट्स योर ड्यूटी कि आप वो मोटिवेशन को इम्प्लीमेंटेशन करो. सर, संदीप माहेश्वरी के सेशंस देख लिए, मोटिवेशन 2 घंटे के लिए आता है, फिर उसके बाद क्या होता है. विवेक बिंद्रा जी का लेक्चर अच्छा लगा, सुनने के लिए अच्छा लगता है, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. मोटिवेशन दिया तो वो अपने आप से एवरेज स्टूडेंट को निकालना पड़ेगा कि मुझे गलत क्या कर रहा हूं मैं. ये बहुत जरूरी है. चलो कोई बात नहीं. सो यू आर गेटिंग दिस लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. सर, वी विल वर्क ऑन दिस 2 months. हम लोग आपका सुनेंगे. सर, सेकंड वन एबीसीडी एनालिसिस, यस वी विल डू दैट आल्सो. सर, थर्ड वन नोटबुक, यस सर वी विल मेंटेन लास्ट डे रिवीजन नोट्स बिकॉज आउट ऑफ 100 lines I have to recall only 5 to 7 lines. And sir, I will now I will underline it properly. First I will read the paragraph carefully, I will wait, I will choose only that 2 lines. Now as a faculty I am aware which are exactly these important sentences. But in students life, मैंने भी ये फील किया है, I was find it difficult to exactly extract that 2 lines from these 5-7 lines. It's difficult. But beta, you have to develop that strategies or these techniques you have to develop by your own. Is very important. And it will need time. But 2 months are sufficient now because you already know about the targets. You know already about your study syllabus. So ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन सपोज मैं करता हूँ, सो आई नो दैट सेंटेंस कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, देन अप्लाइड कि कॉस्ट मतलब क्या सर, कॉस्ट मतलब इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा. सो मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड. सर, व्हाट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सर, डेप्रिसिएशन चैप्टर आया, तो डेप्रिसिएशन में सर दैट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन इज सेम एवरी ईयर, डब्ल्यूडीवी मेथड, इट इज रिड्यूसिंग मेथड. सो दैट यू हैव टू रिकॉल नाउ. You don't have to solve immediately problems based on that. First, you have to identify whether you are getting that concept or not, or whether you can recall that concept or not. Is very important, बेटा. ये recalling करना बहुत जरूरी है, और यही हम लोग करते नहीं है. हम क्या करते हैं, हमें मेन पार्ट ही याद नहीं आता है. सर, डेप्रिसिएशन मुझे मेथड्स भी याद नहीं आ रहे. हाँ, वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, डब्ल्यूडीवी मेथड. सर, सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट, नो सर, आई कैन नॉट नाउ रिकॉल दिस. सो इट नीड्स अ प्रैक्टिस. तो 4 फीचर का आपका टेक्निक तो बढ़िया था. So, but now I have never practiced it. अरे बेटा, it needs 1 minute. Daily 3 topics you can recall ना. That's why you have to prepare this last day revision notes. Hardly 2 pages. Sir, वो भी आप बना के दोगे.
वो तो खुद से बनाओ. That is you have to do by your own. That 2 pages for every chapter. Only formula in that. Only 2 to 3 pages need. Only 2 to 3 pages. Every chapter can summarize in 2 to 3 pages. Even ICA is giving you in the summarized format, beta. At least recall that summary is given at the end. You can see how beautifully they have mentioned all these things, beta. I am thankful to Board of Studies. इतना अच्छे से दिया है. See summary. But we are never focusing on these summaries. Okay. I hope now you understood these techniques. Sir, now come to account subject. Yes. So beta, please promise me in the comment section, sir, yes, we are going to follow all these techniques. Yes, comment section में मुझे जल्दी से बता दो. Okay. Okay. Now I will come to, yes. So now you understood daily you have to target for 10 hours. कितना hours आपको target करना पड़ेगा? 10 hours का target is important. एक सेकंड ना बेटा. प्रॉमिस तो आप लोग कर रहे हो, आई नो. ठीक है सर. बीकॉम एग्जाम बेटा लास्ट 2 months नाउ. यस, लास्ट 2 months बीकॉम एग्जाम तो भूल जाओ. अभी मैं अच्छे के लिए बता रहा हूँ. 2 months यू फोकस ऑन यूर ये फाउंडेशन एग्जाम फॉर नेक्स्ट 2 months. अभी दिवाली है, कौन एग्जाम लेने वाला है यार बीकॉम का? तो अभी बीकॉम एग्जाम को थोड़ा सा लेस प्रायोरिटी दीजिए. इंटरनल्स इज ओके. Internal you can pass by your own. Main exam will be in May or your March and April month. तो बेटा wait for till that time. अभी यार सीए के ऊपर फोकस कर. दिस इज द मेन कोर्स. एटलीस्ट यू टू अंडरस्टैंड ना भाई स्टार्टर क्या है और मेन कोर्स क्या है. स्टार्टर पापड़ ही खाएगा तो भाई बीकॉम करेगा. मेन कोर्स इज अ सीए कोर्स. दैट यू टू अंडरस्टैंड. मेन वो खाना है. मैं पापड़ 25 पापड़ खा के पेट भरूंगा क्या? मेन कोर्स पे मैं फोकस करेगा ना. तो आप ये समझ लीजिए ना बीकॉम का क्या प्रायोरिटी देते हो. ओके ठीक है सर, वी अंडरस्टूड इट. चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम. नाउ second one. Now your targets accounts revision. Now come to accounts revision. I will give you some now techniques for revision. Those who followed from me very first day. Beta, suppose now you forgot any chapter. It's okay. So depreciation का कुछ याद ही नहीं आ रहा है. You can rewatch my session or even other faculty session. You can rewatch that session by using 1.5 speed. Depreciation, inventory valuation are important chapters for 10 marks. So you cannot skip this in the option. Most important chapter is NPO. I will tell all my students कि भाई एनपीओ समझा तो अकाउंट समझा. यू हैव टू अंडरस्टैंड अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होता है. एनपीओ विल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड हाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो रिसिट एंड पेमेंट. सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. According to me, this is heart of this accounts. Those students who can manage NPO, those students who can manage NPO within 30 minutes without adding adless techniques. Sir, I never believe on adless technique. You know from the first day. Most important point, you have to understand T format. T format is important. So depreciation plus inventory and NPO chapter. NPO is most important. Sir, less important. Now journal, ledger, trial balance, second chapter and first chapter. Don't waste your time for revision purpose. Hardly finish it within 30 minutes beta. 30 minutes one unit, 30 minutes second unit, 30 minutes third unit. बस खत्म कर दो.
लेस इंपॉर्टेंट, बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट टेलिंग जर्नल इज नॉट एबल टू, नाउ यू आर एट प्रो लेवल. So journal 2 + 2, sir, I can easily tell you. So 13 into 7 needs practice. 29 into 7, sir, most difficult part. So why should I waste time in understanding 29 into 7? और वो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, आया तो भी 5 मार्क के लिए आने वाला है. And this is now you are at pro level. बेसिक बिगिनर्स लेवल खत्म हो गया. जर्नल लेजर बेसिक लेवल है यार. अब इतने सारे चैप्टर्स कर दिए, जर्नल लेजर करके क्या करोगे? ओके, आफ्टर दैट so focus on company accounts. Company accounts is very important from scoring point of view because there is nothing difficult in this chapter. But you have to understand what is the what are types of capital. Second one, you have to understand application allotment, first call, second call, that we also know. So third one, you have to understand security premium and how it is utilized. Security premium has a credit balance and it is shown under the head reserves and surplus. So fourth part, then you have to understand forfeiture entry. Sir, your technique of diagram is very easy so that I can recall. And then reissue forfeited shares account को cancel करना है तो डेबिट टू कैपिटल रिजर्व खत्म हो गया ना सर. क्या है क्या forfeiture में एंड रीइश्यू में खत्म हो गया. यूनिट 2 ओवर. सो डिबेंचर, डिबेंचर में क्या है? वो इश्यू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, वो भी समझ में आता है. अभी 10 रुपए का शेयर है, 15 रुपए, 10 रुपए का डिबेंचर है, 15 रुपए वापस देना है, 5 रुपए मेरा लॉस होएगा. उसमें कौन सी बड़ी बात है? It's nothing difficult in company account. So why not? It is an easy chapter. But why students are finding it difficult? They are not getting applications or allotment या forfeiture which में आया, and that is only the reason they are finding this chapter difficult. So after company accounts, bill of exchange, consignment, goods sent on approval basis. This chapter is important one because it will give you 7 to 8 marks, and all units are important in this special transaction. So you already taught this in detail. Sir, we will focus on entries. So we will focus on working notes of consignment, how to calculate goods sent on consignment. So I forgot. So watch my session. 1.5 speed, 2 का speed, recall it. रिवीजन है ना भाई, वापस देख लो पूरा. हाउ मच टाइम इट विल टेक? 2 आवर्स का 1 आवर में कंप्लीट होगा. 1 आवर में यू कैन गिव एंड देन यू सॉल्व बाय योर ओन. ऑल दिस टॉपिक्स वंस अगेन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. काय को इतना टेंशन लेना है? अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ओके. आफ्टर दैट फाइनल अकाउंट. सर लॉटरी है, लॉटरी. फाइनल अकाउंट्स, जस्ट पुट डाउन ऑल ट्रायल बैलेंस आइटम्स इन ट्रायल पी एंड एल. बैलेंस शीट खत्म हुआ, कुछ है ही नहीं. है तो फाइनल अकाउंट्स इज नथिंग डिफिकल्ट. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो अलग से बना दिया. मैन्युफैक्चरिंग का बैलेंसिंग फिगर इज सीओजीएस. सीओजीएस को नीचे लाया. वो टू ओपनिंग स्टॉक, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग का अलग बैलेंसिंग फिगर इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन को नीचे लाया. प्रोडक्शन बेचा, सेल्स किया तो जीपी मिल गया. खत्म है ना. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का प्रोडक्शन मिलेगा. प्रोडक्शन में क्या लेना है? मटेरियल लेना है, वेजेस लेना है, फैक्ट्री ओवरहेड लेना है. क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिखा, रॉ मटेरियल ऊपर लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर बाय प्रोडक्शन मिला, प्रोडक्शन को नीचे लिखा, बैलेंसिंग फिगर जीपी लिख दिया. ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल तो आता ही है हमें. सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नया बनाना था. है ही क्या ये टॉपिक? नथिंग डिफिकल्ट. final accounts में just put down your figures in, get the trial balance and balance sheet. Just you have to identify either it is debit balance होगा तो P&L के डेबिट में, नहीं तो एसेट साइड पे जाएगा. क्रेडिट बैलेंस होगा तो P&L के क्रेडिट में या लाइबिलिटी साइड पे जाएगा. तो नथिंग डिफिकल्ट ना बेटा फाइनल अकाउंट्स में. तो आफ्टर दैट फाइनली इफ टाइम परमिट्स तो पार्टनरशिप को ले लीजिए. सर योर टेक्निक, गुडविल एडजस्टमेंट एंड ऑल दैट, 7 सेशंस खत्म. ये भी 7 डे, वो लास्ट में रखो पार्टनरशिप. ओके, सो टारगेट कीजिए ऑल दिस 10 चैप्टर्स. यू हैव टू गिव. एनपीओ को 4 डेज दीजिए. डेप्रिसिएशन 2 डेज प्लस 2 डेज इन्वेंट्री वैल्यूएशन. जर्नल लेजर ये तो बीच बीच में, ये तो अपना यार टाइम पास करना नहीं है डेली बेसिस पे. तो हाफ ऑफ यू आर फॉर ईच एंड एवरी यूनिट. ये जैसे ये डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो ये पढ़ लीजिए. Journal ledger, trial balance and chapter number 1. Boring chapters, but still give me 20 marks beta. Company accounts give maximum 2 days. Bill of exchange, yeah, this is chapter number 6. This you have to give per unit 2 days. So beta, maximum 12 days to this unit. Final accounts 4 days. And partnership 4 to 5 days. 5 plus 4 plus 5 plus 4, 9, 9 plus 12, 21, 23, and 27. 27 plus 4 days, 31. 31 plus 4, 35. 35 days में पूरा रिवीजन हो जाएगा.
and this chota chapter is a masala chapter. Journal ledger, trial balance, first unit and second chapter, nothing. So this is how you have to analyze your topics. So if I'm giving you extra days, partnership, do it at the end. First finish with your small chapters. And this is how you have to do your revisions. It's not only for my subject. It's for all subjects. You have to do these targets. Complete this revision. Draw your revision beta chart, timing. And please keep one day after every 6 days. Because हम लोग target को follow नहीं होता है. And sir, if I'm not recall any chapter, I will watch your session. Once again, it's okay ना. ठीक है, वापस टाइम दिया तो क्या जाता है, मैं कुछ भी याद नहीं आ रहा है, एटलीस्ट हमारा लेवल तो आ जाएगा. Okay, so this is how you have to do your revisions. I need results. I need results. I just don't want कि आपके all red pen adjustments. Sir, whenever you are finding कि I can't solve, and do one important point. Don't use auditing techniques. No auditing. Auditing means क्या sir? Just ticking. Whenever I read the question, I just see the answer. ये इधर गया. No. This technique is very bad technique for account subject and practical subject. Mathematics, don't read the answer. First you try it, then see where are you going wrong and write down that point somewhere. Note down. For example, I solved consignment chapter. If I started consignment account, sir, 2 goods sent on consignment, I calculated it correctly. I wrote it correctly. To cash or bank, I wrote it correctly. To consignee, I wrote it correctly. First, find out the format of this chapter. Then, sir, buy stock on consignment. I got the wrong answer. I am getting 1 lakh. First, you solve by your own. And ICA is getting 1,20,000. Oh, I have not considered consign is non-recurring expenses. So that's why I got the wrong answer. So now, in second question, I won't forget that point and mark down it somewhere. In this question, I found stock on consignment, wrong answer. And next time when you are doing revision, don't solve it thoroughly. You focus only on that point, stock on consignment. That's why your notebook is important. Write each and every illustration. Now, already you have done this. If you have not done this, तो भगवान ही आपको बचाए कि आपकी नोटबुक ही कंप्लीट नहीं है. Each and every question आपको ये लिख के रखना था. तो आपने ये फर्स्ट डे से फॉलो किया नहीं होगा, तो I won't help you out. फिर तो आपका मे फिक्स है. If you are not done 5 months में proper study, then revision तो बनता ही नहीं है बॉस. रिविजन उन्हीं के लिए है जिन्होंने नोटबुक मेंटेन किया है. जिन्होंने ना सर हमने नोटबुक तो 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन नहीं किए, कुछ नहीं होगा. 2 क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन नहीं किए, पूरा करना चाहिए था तब. ठीक है, एक आध चैप्टर का मिसिंग है तो यू कैन डू इट बाय नाउ, स्टिल यू हैव टाइम. बट सपोज सर मेरी नोटबुक ही कंप्लीट नहीं है आज तक, तो काय को दे रहा है भाई नवंबर, फिर तो दे दे अपना, दिसंबर दे मत, फिर जून का देख. ये गलत चीज किया है जिन्होंने अभी तक सीरियसली पढ़ाई नहीं किया है. सो आई वोंट, मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम, डोंट गिव इट, स्किप दिस एग्जाम. इफ यू आर नॉट स्टडीड 4 months का ये प्रॉपर प्लानिंग, 2 महीने में आपका कुछ भी नहीं होगा. ये बिलीव मी, बिकॉज यू हैव टू फॉलो 4 सब्जेक्ट्स. आपने पीछे मेहनत की है, मेरे पापा ने पहले मेहनत की इसलिए हमारा घर बना, फिर मैं उसके ऊपर मेहनत करूंगा तो बंगलो बनेगा. सो ये ध्यान में रखो. आपने जो काम किए हैं पहले 4 months में पढ़ाई थोड़ी थोड़ी की रहेगी तो आज उसका फल मिलने वाला है. सर इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, 2 महीना आर नॉट सफिशिएंट. 0 से स्टार्ट करने, सर आई हैव नॉट स्टडीड अ सिंगल लाइन टिल नाउ एंड 2 महीने में मैं पास होने वाला है. अरे ये क्या बाबा जी का चमत्कार नहीं है, मैंने ऐसा कुछ तो घुमाया और आप पास हो गए. पहले तो ये ध्यान में रखो. ठीक है भाई, मोटिवेशन बस हो गया. नाउ आई टोल्ड यू हाउ टू प्लान आउट. एबीसी एनालिसिस कीजिए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एंड डू अकाउंट सब्जेक्ट्स की रिवीजन प्रॉपरली. आई ऑलरेडी डिवाइडेड ऑल टॉपिक्स टुगेदर कि कैसे डिवाइड करना है ये भी बता दिया है. बाय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, माय मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स दे क्लियर्ड विद 60, 80, 90, 95 तक पहुंच गए. लास्ट बैच में वन स्टूडेंट ऑफ आवर बोर्ड ऑफ स्टडीज, ही गॉट 99 मार्क्स इन कॉस्टिंग. पार्थ शाह को, ही फॉलोड मी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे. पार्थ को 99 मार्क्स इन कॉस्टिंग एंड ओनली वाचिंग बोर्ड ऑफ स्टडीज सेशन ही स्कोर्ड इट. इतना ध्यान में रखो. दिस इज नॉट एडवर्टाइजमेंट. मुझे पता है बोर्ड ऑफ स्टडीज के लेक्चर्स आप लोग इतना आपको फ्री में मिलता है तो उसकी कीमत नहीं है. बहुत से स्टूडेंट्स को है, बहुत से स्टूडेंट्स को दे नो इट टेक्स फ्रॉम द स्टडी मटेरियल. बट स्टिल कैसा होता है, हमें वो चाहिए भाई, मूवी देखना है तो एकदम ग्लैमरस दुनिया में जाके. ऐसा नहीं होता है भाई. ये स्टडी मटेरियल से ही करो. स्टडी मटेरियल ही पढ़ो, बाकी कुछ मत पढ़ो. ये फर्स्ट डे से बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो हमारे राइटर्स है वो भी आपको बता रहे.
और हम लोग भी बता रहे, एंड ऑल फैकल्टीज दे ऑल्सो नो कि उन्होंने सिर्फ उसको कैसे चमकाया है, अल्टीमेटली दे हैव टेकन इट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल ही करो ना भाई, क्यों दूसरा कर रहे हो कुछ तो। ओके सर, ठीक है, हमें समझ में आया। आपके लिए हम लोग रिजल्ट निकालेंगे सर, आपने इतना सिखाया है हमें, तो हम लोग आपके लिए रिजल्ट लाएंगे, और कोई भी मुझे नाराज नहीं करेगा फॉर अदर सब्जेक्ट्स, वो मैं उस सब्जेक्ट्स में नहीं हूँ। आई एम नॉट देयर फॉर अदर सब्जेक्ट्स, बट यू विल फॉलो सेम टेक्निक, एबीसी का टेक्निक फॉर अदर सब्जेक्ट्स। एंड ये मुझे, देखो कोई भी टीचर ये चाहता है कि उसके सभी स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में पास हो, ओके, देन ओनली मेरे टीचिंग का कोई फायदा है। सो इट्स नॉट ओनली कि आई विल फोकस ओनली ऑन अकाउंट। अभी हमारे पुणे ब्रांच में क्या होता है, आई एम टेलिंग यू कि माय स्टूडेंट, ओ सर का डेली ऐसा डर रहता है कि अरे वो आएंगे और बाद में सिर्फ अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट। नो बेटा, यू हैव टू इक्वली डिवाइड योर सब्जेक्ट्स, 3 3 2। ओके, चलो मोटिवेशन बस हो गया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस 2 मंथ्स। हम लोग टच में रहेंगे वेरियस इससे, तो कोई बात नहीं है, हम लोग अच्छे से अच्छा ये कोर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। आई विल मीट, आई वांट टू सी यू ऑल, नॉट ओनली एट फाउंडेशन लेवल, अगेन एट इंटर लेवल एंड अगेन एट फाइनल लेवल। ओके, मैं सबको मिलता रहूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। इफ यू आर फाइंडिंग एनीथिंग डिफिकल्ट, यू कैन बी इन टच बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम थ्रू टच में रहना, कोई बात नहीं है। सो मैं आपसे मिलता भी रहूंगा, पर इंपॉर्टेंट है कि आप आपके टारगेट्स को फिनिश करो। ओके, चलिए। यस, ओके, चलिए, क्या क्या कमेंट्स है आपके, देखते हैं। बेटा नाउ आई कांट आंसर बेटा आदिश, आई विल आंसर योर क्वेश्चन ऑन अनदर, ये तो आप अभी मैं कंपनी अकाउंट से ही रहने दूंगा। सर, I did study material 2 times at least. I was doing revision in parallel classes every day. Very good, beta. So now I can shift to scanner. Yes, beta. Scanner is important. सुचिता प्रकाशन का ले लेना। No promotion of any, बेटा। उन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर्स जो है वो अच्छे से दिए हुए हैं, एंड आई विल ट्राई कि आईसीआई के साथ भी, मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ भी यही पक्का करूंगा कि नेक्स्ट टाइम कि हम लोग पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है वो उसका एक कंपाइलेशन बन सकता है, पहले बनता था। मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उनको भी, कि क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस गायब हो गए हैं, तो इसलिए हम लोग वो लिए नहीं है, पर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग कुछ तो लाने की कोशिश करने के लिए मैं एक रिक्वेस्ट तो करूंगा, तो देखते हैं। पर अभी के लिए आप स्कैनर परचेस कर लो। ओके, यस, यस सर, सर चलो ठीक है। ओके, फाइन, चलिए, चलो, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आते हैं। स्लो करो, इधर से करो। इलस्ट्रेशन 8 ऑलरेडी डन बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 9, issue of debentures is consideration other than cash. Very, very important. Now, beta, we left this part in issue of shares also. Okay, it's very simple part, not difficult at all. But only one question is there based on this issue of debentures in consideration other than cash. Now, what is the meaning? So, meaning is very simple. I issue debentures. Sir, issue debentures means debentures has a credit balance. Debentures has a credit balance, and against that I'm not getting any cash other than cash. So other than cash, what I'm going to receive, but either you will get any asset, you will purchase any asset, and you will give, instead of cash you will pay debentures of your company. So that asset owner, seller of the asset, he will get interest periodically. Okay, instead of getting cash, you are paying to that seller what, beta? Debentures. You are selling debentures to that person. So he's going to get interest on that. He's going to get interest on that. समझ में आया? ओके, ठीक है। So asset account debit to debentures.
asset account debit to debentures. Beta, today is the last session, so I will request you all to give feedbacks, proper feedbacks, because that is seen by the ICI, all other, our team. तो आपको feedbacks देना जरूरी है. Wherever you are finding problems in teaching style या जो भी रहेगा, आप दीजिए. पर positive feedbacks I am expecting, क्योंकि I have given my best to you. But still, anything जो बचा होगा, तो I will try my best. If you have any query, you can ask me through Telegram channel, or you can post it to our ICI के में. हम लोग मेल्स चेक करते रहते हैं. सो क्वेरीज रहेंगे तो भेजो, पर अननेसेसरी डिस्टर्ब मत करो. ये भी मैं बोलता हूँ, कुछ तो फालतू का क्वेरी लेके मत आइए. मैं इतना ही बोलता हूँ. फीडबैक्स आर इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू गिव प्रॉपर फीडबैक्स. इज और वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट. हर फैकल्टी ने हमारा ट्राई किया हुआ है. हर एक का रैपो आपसे मैच भी हुआ है. नाउ आई नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट नेम्स एंड ऑल. तो आशा करता हूं कि आप लोग फीडबैक्स दोगे. ओके, चलिए, ठीक है. सो एसेट अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट. नाउ बेटा, debentures have credit balance and asset has a debit balance. So now important point is that instead of paying cash, I'm issuing debentures. Otherwise, liability is getting cancelled. Okay. So suppose you have taken any loan and you cannot repay it. So last इसमें हमने किया भी था. So you cannot pay it. In that case, what is going to happen, beta? Liability is going to cancel. ठीक है. Liability आपका cancel हो जाएगा. Liability cancel हो जाएगा to debentures. Sundry assets. ओके. तो आप कोई लाइबिलिटी लेके भी ये पेमेंट कर सकते हो. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वेरी इजी वे. एक्स कंपनी लिमिटेड issued 10,000 14% with 50 lakh as follows. To sundry person for cash 90% of the nominal value. So nominal value का कितना परसेंट है? Nominal value 25 lakhs. 90% of nominal value. So you are paying him 22,50,000. Okay. So yes, so this is a new entry. 22,50,000 you are buying cash and you are issuing debentures. You are issuing debentures of 25 lakhs. So beta 2,50,000 is your discount. 2,50,000 is your discount. You can write that. तो 25 लाख के बदले में आपने लोगों से कितना पैसा लिया? 90%. I have taken 90%. To vendor fixed asset worth rupees 10 lakhs by issuing 12,50,000. So asset account debit 10 lakhs, 12,50,000. So again 2,50,000 cha discount. So discount is 2,50,000. And to a banker collateral security. Now collateral security is nothing is given. Don't open beta debenture suspense account. Go by option number 1. Go by option number 1. And what is the option number 1? Option number 1 talks about, yes, no need to create debenture suspense account. Please watch my previous session. I already told you this. Okay. So previous session ko yaad kar lo. So entry will be bank A entry, bank account debit to debentures application for A. Yes, and debentures application account debit is going to cancel discount account debit to debentures. Debentures 14% debentures 25 lakhs. Second entry fixed asset account debit to vendor. Vendor is your creditor. So first day session. Creditor becomes receiver. So creditor becomes receiver. So vendor is a temporary account. Vendor is a temporary account. So fixed asset account debit to vendor 10 लाख का एसेट लिया एंड वेंडर को कितने का रिसीवर 12 लाख 14% डिबेंचर्स ऑफ 12,50,000. So beta balancing figure is discount. So very simple entry. So entry is once again asset comes in asset account debit to vendor by asset price.
By which price beta? Asset price is 10 lakhs. Asset comes in, vendor is my creditor. How you are going to pay him? Sir, are you going to pay him cash? No, sir. Instead of cash, we are giving not cash. Instead of cash, we are giving 14% debentures. But beta, this is at asset price and this is at face value. So balancing figure is discount account debit. This is a loss. Yes. Recall this entry बेटा. चलो जल्दी से recall कीजिए. Comment section में लिख दीजिए. What is the entry? What is the entry? Comment section में लिख दीजिए. It's very simple बेटा. Don't have negative thoughts about this course. Always say positively, I'm going to pass. I'm going to pass. Yes, I'm going to pass. Is also very important. Those students who are always thinking, यार मैं बहुत difficult कुछ तो पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं होगा. Negative चीज है, मत आने दीजिए. Always be positive. It's a mental game, बेटा. CA course is a totally your mind game. हमारे जितने भी CA इंस्टीट्यूट से पास हुए, ऐसा नहीं है. I have seen those students who are very below average, but consistency and hard work, it pays. Yes, I am an intelligent man. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे देख के समझ में आता है. कुछ मेरे फ्रेंड्स मेरे से इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है इन रियल लाइफ ऑल्सो. बाय वॉचिंग एनी अभी मैं सपोज कोई भी खर्चा रहेगा तो मुझे ध्यान में आ जाता है. तो ये मेरा चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है और सीए कोर्स ने मुझे ये बताया. इफ आई एम स्टार्टिंग विथ न्यू वेंचर ऑल्सो, आई ऑलवेज थिंक कि हम लोग फिगर्स को समझ सकते हैं, हमें कॉस्टिंग पता है, हमें अकाउंट समझ में आता है. सो स्टिल कि हमें पूरा प्रोसेस नहीं पता होगा फॉर एनी बिजनेस, बट वी कैन फाइंड आउट वेदर ये बिजनेस मुझे अच्छा पैसा कमा के देगा या नहीं कमा के देगा. सो मेंटल गेम ये बहुत जरूरी है. ये आपको ये सिखाएगा, फिट करेगा. ओके, और स्ट्रांग रहिए लाइफ में. कुछ नहीं, दिक्कतें सबको आने वाली है. यस बेटा, सही है माँ, डोंट वरी. चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ओके, सबने लिख दिया. वेरी गुड. एंड लास्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हम लोग ओपन नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू फॉलो मेथड नंबर 1. वी आर गोइंग टू फॉलो मेथड नंबर 1. So cash account debit or bank account debit to bank loan. So only 10 lakhs. Sir, what about that securities which I've given? So this note is important. No entry is made in the books at the time of issuing debentures. So we have followed option number 1. We have followed option number 1 in the balance sheet, and that debentures being issued as a collateral security. Okay, we have not recorded. When we are going to record? When we have not paid it. Okay, not paid it, then loan to debentures in future. Loan to debentures. So no need to pass entry for debentures. Collateral security तरीके से issue किया तो. So got this? Easy है? Easy है बेटा? Second concept. Second concept. Chalo. So today's concept, beta, what is the new concept? When debentures are issued for consideration other than cash. अभिनव कुमार, अभी फिलहाल तो कुछ अपडेट्स आए नहीं है और जून एग्जाम. सो आई एम एग्जैक्टली नॉट अवेयर अबाउट द न्यू सिलेबस, पर अभी तक मेरे पास अपडेट्स नहीं आए हैं. जैसे अपडेट आ जाएंगे ऐसे आपने वेबसाइट पे डाल देगी. सो किसी के भी आप वीडियोस मत देखो, क्योंकि किसी को भी इसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि सिलेबस क्या आने वाला है. ओके, जब तक आईसीआई के वेबसाइट पे अनाउंस नहीं होता है तब तक आप टेंशन मत लीजिए. आईसीआई वाले निकाल देंगे ये सिलेबस नया क्या है. चलिए, इलू 11. सर डिस्काउंट. सर टेल मी डिस्काउंट ट्रीटमेंट. सर डिस्काउंट ट्रीटमेंट आई वांट. ओके, एवरी वन ऑफ यू, डिस्काउंट को कौन सा बैलेंस है बेटा? डिस्काउंट को बैलेंस कौन सा होता है? डिस्काउंट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. तब तक मैं आंसर दे देता हूं
अर्शदीप पूछ रहे व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर। सो आप तब तक कमेंट सेक्शन में लिखना डिस्काउंट का बैलेंस कौन सा होता है। सो टिल दैट टाइम आई विल आंसर द क्वेश्चन ऑफ अर्शदीप। सो स्वेट इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच आर इशूड टू अवर एम्प्लॉय। स्वेट मतलब पसीना, पसीना कौन निकालता है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, बट ऑब्वियस एम्प्लॉय। एंड टू, एज अ कंसर्न, एज अ बिजनेसमैन, आई शुड think not only of mine but my employees, and I'm giving him apart from salary any shares. Such shares are called as sweat equity shares. So sweat means पसीना, and वो किसको देते हैं, तो पसीना निकालने वाले लोगों को शेयर्स देना, मतलब एम्प्लॉयज को शेयर्स देना, तो उसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा कम प्राइस पे। हमारे एम्प्लॉयज को हम लोग सेम चीज 10 रुपए का शेयर मार्केट में दे रहे हैं, तो हम लोग उनसे बेटा 7-8 रुपए में भी दे सकते हैं। तो उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। Okay. Okay. Very good. Very good. Very good. Everyone answered it. Debit balance, debit balance, debit balance. So discount. अरे वाह, संकेतकर सर के स्टूडेंट एकदम छा गए सभी लोग। यस बेटा, वेरी प्राउड ऑफ यू। सो डेबिट बैलेंस आपने आंसर दिया, डेबिट बैलेंस। सो डिस्काउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट को कौन सा बैलेंस होगा, डिस्काउंट को होगा तो डेबिट बैलेंस। नाउ हाउ टू राइट ऑफ दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिस्काउंट है। नाउ इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई जस्ट वांट टू आई एम नॉट एग्रीड विद द discount technique of our syllabus, but beta for passing it is important. If you ask me personally, this discount has to be transferred totally to P&L account in this year only. So ये P&L में पूरा का पूरा ट्रांसफर करना ही चाहिए in the same year as per accounting standards. Okay, so as per accounting standards, but in CA Foundation, let it be in future, we will directly tell this कि discount will be directly transferred to P&L account. But for passing your exam, this suppose exam में ये question आता है, so this discount has to be written off as per accounting standard. If you ask me personally, I'm not telling the view of अभी ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज ने जो दिया है वही व्यू लेके चलना है, but still I am telling you कि discount is asked, so discount will be transferred in P&L. Suppose discount is given 100 rupees का discount, for example, assume, okay, so bank account debit, okay, I will change the figure, bank account debit 90, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 टू 14% डिवेंचर। संकेत सर क्या बोलते हैं, ऑलवेज थिंक फॉर वन क्वेश्चन, वन डिवेंचर। सो व्हाट इज योर डिस्काउंट, डिस्काउंट इज ₹10। ओके, नाउ दिस लॉस अकॉर्डिंग टू मी पूरा का पूरा लॉस P&L को ट्रांसफर कर दीजिए, पूरा का पूरा लॉस अभी P&L को ट्रांसफर कर दीजिए एज पर एसएस। आई एम गिविंग यू दैट टेक्निक ऑल्सो, ठीक है, एग्जाम में मत फॉलो करना, बट यस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट हैज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर माई ओपिनियन। हाँ, बट एज पर स्टडी मटेरियल, ओके, स्टडी मटेरियल के हिसाब से, ओके, सो स्टडी मटेरियल के हिसाब से आईसीआई ने स्टडी मटेरियल के हिसाब से यस लॉस को दो ट्रीटमेंट्स दिए हैं, ट्रीटमेंट 1 and treatment 2. Okay, so you can write this chart, treatment 1 and treatment 2. So treatment 1 पे आते हैं। ट्रीटमेंट 1 पे आते हैं। ट्रीटमेंट 1, this loss has to be written off. This loss has to be written off over certain years. This loss has to be written off over certain years. Okay. For example, now debentures you are redeeming it. Redeeming means वापस लेना. ओके, डिबेंचर्स वापस लेना, कैश पे करना, यू पे कैश एंड यू टेक यूर डिबेंचर्स वंस अगेन। सो एट द एडवांस यू आर अवेयर दैट यूर लोन when you are going to repay it. Okay, so repayment, redemption means repay it. So when you are going to repay after 5 years, okay, when you are going to repay after 5 years. So I'm giving you one option. So treatment number 1 is you are redeeming in after 5 years. Okay, full
900 rupees, full 100 rupees. You are going to repay it in how many years, beta? 5 years. So beta 5 years mein, so this loss of rupees 10 is divided over 5 years. So P&L mein you will transfer 2 rupees. P&L mein you will transfer 2 rupees. So see, suppose if I open discount account, okay, so if I open discount account, which balance? Debit plus credit minus, okay, debit plus, because it's a loss. So two debentures, how much, beta? 10 rupees. So out of this you will transfer to P&L 2 rupees. So beta, by balance carried down, 8 rupees. Now this balance carried down you will show under the head other non-current assets. Now according to me it has to be shown. Suppose यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है, instead of showing it other non-current assets, ICI ने ये किसके यहाँ पे बताना चाहिए था? ICI ने ये non-current assets में नहीं बताना चाहिए था, ये P&L में से माइनस करना चाहिए था. Where to show it? Not under other non-current assets. It's given in the ICI study material. If you ask me personally, तो ये P&L reserves and surplus में से निगेटिव बताना चाहिए था. ये कहाँ पे बताना? Because this is a loss. तो मेरे हिसाब से reserves and surplus में से निगेटिव फिगर दिखाना चाहिए. पर फिलहाल स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है other non-current assets. other non-current assets हेड के अंदर. But if you tell me, ask me personally, तो ये reserves and surplus में से माइनस दिखाना चाहिए about 8 rupees. In exam, you are not going to ask about this 8 rupees. This is only the sentence which is given in the ICI study material. It is shown under the head other non-current assets. Next year, what happens, beta? Next year, 2 balance brought down 8. By P&L, next year you will transfer 2 rupees and again by balance carried down आपका कितना दिखेगा? 6 रुपया. आपको मैं ICI स्टडी मटेरियल में जो दिया है वही बताऊंगा. अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर नाउ इन नेक्स्ट ईयर यू विल शो 6 rupees, then 4, then 2 and next last year will be 0. Okay, everything is written off. Written off after कितने years? Written off means what? Written off means transfer to P&L. P&L में कितना जाएगा? Transfer to P&L is called as written off. So not written off, 2 rupees is written off, not written off 8 rupees in the first year. In the second year 2 rupees is written off and 6 rupees is not yet written off. So 2 rupees is written off, 4 rupees is not yet written off. So 2 और कम होगा 2 and last year में 2 and 0. So this is the concept of written off and not written off. Written off means transfer to P&L every year to 2 rupees and not transfer means it is 86420. It is called as not written off. You got this concept? ठीक है? अरे समझू के? अरे बोलो बोलो बोलो. Written off means what? Transfer to P&L. Not written off means not transfer to P&L, which is shown under the head other non-current asset. चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि समझा या नहीं समझा सर, जब समझा या नहीं समझा. आई एम गोइंग टू मिस यू ऑल यार. रोज का मिस करूंगा मैं आप सबको. अंजना, ईशा, आदिश, भूमिका, सब अपने, केशव, बेटा पढ़ाई करना अच्छे से सब लोग. आप सबको मैंने देखा नहीं है फिर भी सबके साथ एक बरकतुल्ला जी, यस बेटा, सब नाम अभी पता है. ओके चलिए. सो रिटर्न ऑफ एंड नॉन रिटर्न ऑफ. आज तो बहुत सारे नए बच्चे भी दिख रहे हैं यार. लास्ट डे के लिए देखने आए सर को या पहले से अटेंड करते हो? मैंने कभी नाम नहीं देखे आप लोगों के. ओके मानवी, अरे बेटा बैलेंस शीट में वो जो रिटर्न ऑफ नहीं होगा वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके दिखेगा. बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके दिखेगा तो कौन से हेड के अंदर दिखेगा? बाय बैलेंस मतलब किधर तो एसेट साइड पे लेके जाना पड़ेगा ना. डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में किधर लेके जाएंगे? आइदर निगेटिव बताओ लाइबिलिटी साइड में से या पॉजिटिव बताओ एसेट साइड में. ओके डेबिट बैलेंस है तो हमने कहाँ पे बताया ये? एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल अदर नॉन करंट एसेट. संकेत सर को पूछेगी तो सर क्या बोल रहे? रिजर्व्स एंड सरप्लस में निगेटिव बताना है. आया समझ में बेटा? हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन. नाउ सर अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट नंबर 2. Treatment number 2. Okay, so suppose my opening balance, then assume redeem. Redeem means repayment and closing balance. Suppose I have taken
यू नो लोन के केस में क्या होता है, इन लोन योर इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट. ओके, so your principal amount and interest amount, so you are repaying some part of principal amount also. So in first option what happened, 100 rupees we have taken, 90 rupees we have taken, but we are paying 100 rupees at the end of 5 years. At the end of 5 years we are paying full 100 rupees. What is the second option that you have? Second option that you have, take 100 rupees or take 90 rupees, but every year pay 20, 20, 20, 20, 20. So 100 rupees is a face value. But how you are paying it? First year 20, year column 1, 2, 3, 4, 5. You are not paying in one stroke, beta. One payment is not there. Directly 100 rupees. You are paying 20, 20, 20 every year, 5 years. Mein. So what is the outstanding balance? 80 rupees in first year. 80, 20, 60. 60, 20, 40. 60 rupees opening balance. 40 rupees will come to opening balance. 20 rupees you are going to pay. 20 rupees is still remaining. 20 rupees is opening balance. 20 you are going to pay and 0 rupees balance. So 100 rupees था. हमने 100 रुपीज 20 पे किया, 80 बचा, 80 में से 20 पे किया, 60 बचा. तो एवरी ईयर 20-20 से लाइबिलिटी कम होगी. नाउ हाउ टू राइट ऑफ इन द ओपनिंग बैलेंस रेशियो. हाउ टू राइट ऑफ इन द ओपनिंग बैलेंस रेशियो. 10:8:6:4:2. सो बेटा वी आर पेइंग इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4:5. ये 5:4, सॉरी उल्टा, 5:4:3:2:1 रेशियो में ₹10 को राइट ऑफ करना है. यू हैव टू राइट ऑफ ₹10. But how you are going to write off? Not equally. 2. No, you are going to write off it in this ratio. 5 plus 4 कितना हुआ? 9. 9 plus 3 12. 12 plus 2 14. 14 plus 1 15. So बेटा year wise return off. Year return off, not return off. Year 1 कितना write off करोगे? 10 into 5/15. 10 into 5/15. 10 rupees is your loss and you will write it off in 5:5/15 in the ratio. So 10 divided by 15 into 5 is equal to कितना हुआ? 3.33. So बचा कितना? -10. 6.67. Second year 10 rupees into 4/15. 2.67. बचा कितना? 6.67 में से 2.67 गया, बचा 4. इन थर्ड ईयर 10 into 3/15. So 10 into 3/15, 2 rupees. बचा कितना? 2. Fourth year. Now you tell for 4 and 5th year. Return off and not return off. You only tell me the answer. Yes, return off and not return off. नहीं मानवी खन्ना जी, बैलेंस शीट रिप्रेजेंटेशन मतलब एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट्स के अंदर जाएगा. नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही बेटा, अदर नॉन करंट एसेट्स. यस बेटा, सहजप्रीत कौर डेफर्ड एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट जैसा ही है, विच इज नॉट देयर. अंजना जी थैंक यू बेटा, आई एम लकी दैट मैंने आपसे पढ़ाई की. वेरी गुड बेटा. अभिनव कुमार, फीवर टाइम में भी आपके क्लास से मोटिवेशन मिलता था. थैंक यू बेटा. कुणाल जैन, व्हाट इज ट्रस्ट डीड? बेटा ट्रस्ट डीड मतलब डिवेंचर ट्रस्टीज होते हैं. डिवेंचर ट्रस्टी मतलब अभी ये डिवेंचर होल्डर्स की एक टीम रहेगी, तो सभी डिवेंचर होल्डर्स को प्रॉब्लम आया तो कोई तो कमिटी वहां पे जाएगी, तो उसको बोलते हैं डिवेंचर के साथ ट्रस्टीज होते हैं. तो डिवेंचर ट्रस्टीज मतलब डिवेंचर होल्डर्स में से ही उनकी एक कोई 50 डिवेंचर ट्रस्टीज में से 2-3 लोगों को बुला लेना ट्रस्टी में. ट्रस्टी तो आपको पता है ना कि भाई आपके समाज में भी ट्रस्टीज रहेंगे, तो डिवेंचर होल्डर्स के ट्रस्टीज, तो वो कंपनी के साथ बात करेंगे. यदि कुछ दिक्कतें आई, इंटरेस्ट टाइम पे नहीं मिला या प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में कुछ होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं. ओके, वेरी गुड.
very good. 1.33, 0.67 and 0.67 and 0. Yes, very good beta. So आपको मैंने बता दिया how to divide it. So illustration number, yes beta, illustration number 11 is very easy now. So beta, option number 1 is that you will divide it over 5 years directly. ठीक है? Think for one question, think for one, you will get the answer. Okay, चलो. HDC Limited issues 1 lakh debentures, 12% debentures, 100 each at rupees 94. So beta, 6 rupees is a loss. 6 rupees is a loss. On 1st January 2020, it is at the end of 5 years, they are going to redeem. हाँ, तो full they are going to redeem. So beta, this is treatment number 1. So treatment number 1 is that you will divide it. So illustration number 11 is treatment number 1, 6 rupees per debenture. How many debentures are there? 1 lakh debentures. So your total loss is 6 lakhs. And this will divided over 5 years. So you can write directly answer 1,20,000 per annum. एक बीस इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है. 120 per annum. So you are going to divide it 1,20,000 per annum. So first year total 6 lakhs. So loss is 6 lakhs. Out of this 1,20,000 written off. Second year you left with 4,80,000. 1,20,000 you return off. So every year balance is going to decrease. You got this 11 number now beta. Please tell me टोटल लॉस. एक बार हिंदी में बता देता हूँ. 1 लाख डिबेंचर्स है. 1 लाख डिबेंचर्स में 6 रुपए का एक डिबेंचर के पीछे लॉस है. तो टोटल डिबेंचर लॉस कितना होएगा? 6 लाख रुपया. 6 लाख रुपया जो है वो 5 साल के बाद हमें पैसा वापस देना है. तो 5 साल में हम लोग डिवाइड कर देंगे पूरा का पूरा. सो 6 लाख डिवाइड बाय 5 इयर्स. तो क्या होगा? 1,20,000. कौन सा रेशियो में होएगा? 1,20,000 डायरेक्टली डिवाइड बाय 5 करेंगे. डायरेक्टली डिवाइड बाय 5 करेंगे. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. इजी है. मैं ऑलरेडी बताया था आपको कि इट्स वेरी इजी बेटा. इट्स वेरी इजी. आज थोड़ा सा मोटिवेशन टॉक ज्यादा हो गया. एकता तिवारी बोल रहे हैं कि मुझे स्क्रीनशॉट लेना है. काई का स्क्रीनशॉट लेना है बेटा? अच्छा, ये ऊपर वाला. हाँ जी. ट्रीटमेंट 2 divide in the ratio. Treatment 2 divide in the ratio. Divide in the ratio. This loss has to be divided in the ratio. चलिए 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 फास्ट फास्ट चलिए. Yes, last one. Ilu 12, and after that we are going to take a small break of 5 to 10 minutes and we will come back with this last calculation. TDS. TDS is the best concept. ना मस्त मजा आएगा आपको TDS concept में. And after that we are going to finish with this 4 feature का एक last problem है, उतना finish करेंगे और फिर आपका एग्जाम और आप पूरा का पूरा स्पीड लगा के भागना. अभी सिर्फ रिवीजन करना. इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आते हैं. 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स है. 12%, 12 each, 9.4. 9.4 means 0.6. 0.6 is a loss. 0.6 is a loss. So 2 lakhs के पीछे 0.6 is a loss. So total loss will be, yes बेटा, कितना लॉस होएगा? 2 lakhs into 0.6 मतलब 1,20,000. Now this 1,20,000, 1/5 of the debentures are redeemed annually by drawings. Okay. So अभी annually by drawings means what? पहले साल में 5 रुपए डिवेंचर था. तो फिर 1/5 मीन्स यू विल पे 1 रुपी. सो बचा 4. फिर 1 रुपी पे किया. 3, 2, 1. सो यू विल डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3:1, 2:1. तो ऐसे का प्रेजेंटेशन मत देखो ये यहाँ पे. सो 1,20,000 that you have to divide it in the ratio of 5:4:3:2:1. So 1,20,000 take on calci. 1,20,000 divide by, yes, इनकी टोटल कितनी है? 15. So divide by 15 into 5 is equal to, so 5 is equal to कितना आया? 40,000. Divide it in the ratio. Then 4 is equal to, so 4 is equal to कितना आया? 32,000. फिर कितना आया? 24,000. 3 is equal to, on calci शॉर्टकट आपको पता है. अरे शॉर्टकट है ना. 1,20,000 वापस लो. 1,20,000 डिवाइड बाय 15 into 5 is equal to, कैल्सी पे सीखा होगा ना आपने. 4 is equal to 32,000. 3 is equal to 24,000. 2 is equal to 16,000. 1 is equal to 8,000. And this is the answer. Yes, I'm getting the answer: 40, 32, 24, 16, and 8. So you have to divide it in the ratio 5:4:3. Why? Suppose if 1/6 is redeemed. 1/6 is redeemed. So beta 6:5:4:3:2:1.
So this is the ratio. Whatever loss you have, that will be divided in the ratio like this. 1 rupee you redeem every year. Every year you are redeeming, then this is treatment number 2. So this is treatment number 2. When to use this treatment beta? When you are redeeming in the proportion में यदि आप रिडीम करते हो तो आप सेकंड ऑप्शन से जाओगे. इतना याद रखिए. बहुत सिंपल था, एकदम इजी है. चलो टेक अ ब्रेक. जल्दी से मिलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके. टीडीएस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, डोंट मिस इट. सो टेक ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट. 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और 10 मिनट्स में वापस कम बैक करेंगे और इंटरेस्ट टीडीएस की एक अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेंगे. तब तक यस आप ब्रेक ले लेना और चाय पी लेना. चलो मेरी भी चाय आ चुकी है. चलो जल्दी से.
Chalo, let's move to last concept. Interest on debentures of this chapter. Very, very easy concept, beta. Once you have to understand what is TDS. What is TDS concept that you have to understand. So I will draw a diagram for you. First, I will tell you how to calculate TDS. What is the concept of TDS? Yes, any one of you know the concept of TDS? See, beta. Now, tax subject is new for you and this course subject is at intermediate. So this is a something concept which is not required at foundation level, but still we have one illustration based on tax deducted at source. So first I will tell you exactly what is TDS concept. Yes, anyone of you knows what is TDS? Just waiting for your comments. Okay, tax deducted at source. See, common sense है बेटा, at source. What is the tax deducted? Tax deducted मतलब क्या? For example, company and debenture holder. Who is going to receive what? That you have to tell me. Yes? Who is going to receive what? Okay. Company is issuing debenture. They are getting cash. After that, after 1 year, who is going to pay what? Or who is going to receive what? Yes, tell me. Chalo, think it. Yes. No, beta. Tax is not payable on debenture. Tax is not debentures. Tax is on interest, beta, because source means what? Income source. Which is a source, beta? Income source. So debenture holder will get interest on this. Okay? Debenture holder will get interest on this. Very good. Company will pay interest and debenture holder will get interest. So for debenture holders, it's an income source. Okay, any investor has some income source. So investor is getting interest out of this. Very simple. So source is interest. Now government is telling you, if now, yes, company is paying 100 rupees interest to debenture holder. Assume company is paying the 100 rupees interest to debenture holder. So government is saying that you cannot pay 100 rupees directly to debenture holders. Now what you have to do? What you have to do? If you are paying 100 rupees, so out of 100, now these rates are given by government. Okay, income tax act में ये सभी rates दिए हुए हैं. So if you are paying 100 rupees to debenture holder, and now what happened? Debenture holder will pay to government tax. Okay, debenture holder will file the return, then they will file the tax. So tax जो collection है, that will be postponed. Okay, that will get postponed. और debenture holder ने pay ही नहीं किया तो ये भी हो सकता है कि debenture holder has not paid to government. So income tax act is very smart act बेटा. Income tax act ने क्या बोला? Suppose instead of paying by debenture holders to government, company only will pay directly at source. So company will pay 90 rupees to debenture holders. 10% is a TDS rate. 10% is a TDS rate. So 100 pay 10% and rupees 10 to government. Rupees 10 to government. So company is not paying any extra amount. Just they will bifurcate. 90 rupees will be paid debenture holders को and 10 rupees will be paid to government. Beta, now this TDS calculation का पैसा will taken by chartered accountant. Chartered accountant will file this return. Chartered accountant will submit this return. Okay, ये पहले चालान भरेगा, फिर वो सबमिट करेगा, वो पैसा फिर 3 महीने में क्वार्टरली इसका रिपोर्ट बनाएगा, मंथली भी रिपोर्ट्स होते हैं. सो TDS का काम आपको एक अपॉर्चुनिटी है टू चार्टर्ड अकाउंटेंट. लेट इट बी वेरी सिंपल. ओके, हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, चलान्स एंड ऑल, बट 10 रुपीज इट्स कॉमन सेंस कि ये गवर्नमेंट को पे किया जाएगा थ्रू सम documents. Okay, through some documents, and 90 rupees will be paid to debenture holder. Very simple concept TDS ka. Now beta see this 10 rupees if not paid to government, what happens? Now what are implications?
गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ एक्सपेंडिचर टू बी क्लेम बाय कंपनी। तो कंपनी को एक्सपेंडिचर 100 रुपीज का डिडक्शन दे आर पेइंग। सो फॉर एग्जांपल, इफ माय प्रॉफिट इज 200, income is 200 and my interest expenditure is 100, then my net profit will be 100. So I have to pay tax on 100. Suppose I have to pay tax on 100. Okay. So now income tax act says if you are not allowing, you are not paid TDS. So we won't allow this expenditure. We won't allow this expenditure for tax purpose. So you have to pay tax on 200. यदि आपने, मैं एक सिंपल हिंदी में बताता हूं कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, यदि आपने ये 10 रुपया नहीं पे किया, फॉर एग्जाम्पल अभी हिंदी में पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, टीडीएस क्या है। कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है 100 रुपया का इंटरेस्ट किसको पे करना है, डिबेंचर होल्डर। पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, भाई 100 रुपया तो डायरेक्टली नहीं पे करेगा, 90 रुपए तू डिबेंचर होल्डर को पे करेगा, 10 रुपए गवर्नमेंट को पे करेगा। भाई गवर्नमेंट क्यों अपना रिवेन्यू पोस्टपोन करवाए। गवर्नमेंट बोलता है ये बाद में टैक्स नहीं भरेगा तो क्या, ये तो एक बार इसको 100 रुपया मिलेगा, इसके पास तो बहुत रास्ते हैं, ये क्या करेगा, ये टैक्स ही नहीं पे करेगा, हम लोग तो इधर लुक्के बैठेंगे। तो ये चीज जो है गवर्नमेंट क्या बोलती है कि 90 रुपीज जो है वो डिबेंचर होल्डर को पे करो, 10 रुपया हमें पे करो। फिर सपोज डिबेंचर होल्डर को इनकम नहीं होता है, डिबेंचर होल्डर को इनकम नहीं होता है कि भाई हमारा इतना इनकम ही नहीं है कि मैं टैक्स क्यों भरूं, तो 10 रुपए को रिफंड क्लेम कर, 10 रुपए को रिफंड क्लेम कर। और यदि 25 रुपया टैक्स डिबेंचर होल्डर का है, एग्जांपल इन फ्यूचर 25 रुपया डिबेंचर होल्डर का टैक्स है, तो 10 रुपया कट करके सिर्फ 15 भरना, क्योंकि तेरा 10 रुपया मेरे पास आ चुका है, तो वापस से तुझे 10 रुपया भरने की जरूरत नहीं। 25 रुपया टैक्स होगा तो 10 रुपया तूने भर दिया है, 15 रुपए लेके जाना। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, सो गवर्नमेंट तो बहुत क्लियर है कि 10 रुपए तुझे मुझे देना है। पर यदि कंपनी ने 10 रुपए दिया नहीं, सर कंपनी ने 10 रुपए दिया ही नहीं, तो क्या होगा, फिर वो गवर्नमेंट बहुत शानी है बेटा ये केस में। तो प्रॉफिट जो 200 रुपया है, प्रॉफिट 200 रुपए में से जो एक्सपेंडिचर 100 रुपीज क्लेम होगा, तो जो नेट प्रॉफिट 100 रुपीज बचेगा उसके ऊपर तुम्हें टैक्स पे करना पड़ता था, तो ये एक्सपेंडिचर ही मैं कैंसिल कर देगा। वो सर मुझे 200 पे टैक्स भरना पड़ेगा, हाँ तुझे 200 पे टैक्स भरना पड़ेगा, इससे अच्छा 10 गवर्नमेंट को दे दो ना, कौन दिक्कत करके ले रहा है। मेरा टैक्स नहीं तो मेरा 30 रुपया टैक्स बढ़ जाएगा, 10 रुपया गवर्नमेंट को पे किया रहता तो अच्छा हुआ रहता, नहीं तो मेरे जेब से 30 रुपया जाएगा। कंपनी चुपचाप ये पैसा पे करेगी, कंपनी बोलेगी मुझे टैक्स नहीं भरना है, मैं तो बाबा इंटरेस्ट पे कर देता हूँ, डिडक्शन भी देता हूँ, गवर्नमेंट को 10 रुपया पे कर देता हूँ। एंड दिस 10 रुपीज इज कॉल्ड एज टीडीएस, दिस 10 रुपीज इज कॉल्ड एज टीडीएस। नाउ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट बोलती है भाई हम लोग हमारा पैसा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग हमारा पैसा नहीं छोड़ेंगे, अब भी के अब भी पे करना है। तुम 100 रुपया गवर्नमेंट शेयर होल्डर को पे कर रहे हो ना, डिबेंचर होल्डर को पे कर रहे हो ना, तो 90 रुपीज उधर पे करने का, 10 रुपया हमें पे करने का। सर कितने केसेस में टीडीएस होता है, सर टीडीएस जहां जहां इनकम है वहां पे टीडीएस होगा। फॉर एग्जांपल जब आईसीआई मुझे कुछ अभी प्रोफेशनल फीस देगी, जो भी 100 रुपया 200 रुपया मुझे आईसीआई से मिलेगा, तो वो 200 रुपए से बेटा मेरा 20 रुपया तो टीडीएस में जाता है, बचा क्या मेरे लिए। ठीक है, फिर भी अपने को हंसी खुशी देना है, तो ये 20 रुपया देना है, इतना याद रखो, 10% प्रोफेशनल फीस पे। सर रेंट लेता हूं, मैं रेंट लेता हूं, रेंट के ऊपर भी मुझे टीडीएस पे करना पड़ेगा, वो सामने वाला टीडीएस कट कर देता है। रेंट लेता है प्रोफेशनल, वो अपनी बैलेंस शीट पी&एल बना रहा है, तो ये सोल प्रोपराइटर होगा तो नहीं पे करता। ओके, अभी उसमें बहुत सारे आगे के व्यूज है, वो आपको बाद में समझेंगे। अभी ये सपोज मैं रेंट लेता हूँ, एक कोई वहां पे जो फैमिली रहती है वो गरीब फैमिली, उनसे मैं रेंट लेता हूँ, तो वो काई का टीडीएस भरेगा, वो नहीं भर सकता। ये कौन भरेगा, जो कंपनी का पी&एल और बैलेंस शीट है। सोल प्रोपराइटर के केस में क्या होता है, वो बाद में, बिजनेस करने वालों को ये करना है, बिजनेस करने वालों को। ओके, तो वो बहुत सारे चुटकुले वो बाद में समझेंगे आपको। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये टीडीएस कॉन्सेप्ट होती क्या है, ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां पे सोर्स ऑफ इनकम है वहां पे डिडक्ट करो और गवर्नमेंट को पे करो, फिर वो जिसको पैसा मिलने वाला है वो बाद में क्लेम कर लेगा। यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। यस, गॉट दिस, गॉट दिस, गॉट दिस। हाँ, यस बेटा, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय सैलरी के साथ भी सेम होता है, सर्च प्रीत कौर, वेरी गुड बेटा। सो वेर एवर देर इज इनकम सोर्स, गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट, गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट पे मी some percentage wherever you are paying to that debenture holders. बेटा at foundation level to understand TDS is very difficult ना, it's very difficult कि ये लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट डालो।
Okay. And from company angle, TDS is liability. From company angle, TDS is liability. And from debenture holders, TDS is an asset. One liability, for one it is an asset. हाँ बेटा, TCS अभी वो नहीं बताएगा मैं. बरकतुल्ला तू एक स्टेप आगे ही बढ़ता रहता है, कह रहे तू फाउंडेशन में क्या इंटर में? मुझे तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है. Are you in foundation or are you at inter? You are asking me what is about debenture redemption reserve. That is at inter level, beta. Redemption. We are here only issue of debentures. We are not talking about redemption of debentures. At inter level, I will tell you redemption also. Issue at foundation, redemption at intermediate. I think you are studying not for foundation. You are studying from inter. जो questions आप मुझे पूछते हो. Okay. मजा है ना concepts TDS? Very easy concept ना? So बेटा, now we are going to solve one problem. TDS के रेट फिक्स होते क्या? Yes बेटा, TDS rates are always fixed. Next one, next question. At foundation level, you have to understand only TDS rates and all are different one. That you have to study at intermediate level. तब मुझे याद करना कि sir already taught us TDS concept. Wherever there is a source of income, you have to deduct that tax. Tax deducted at source of income. Income source means income source. Yes, beta. Sahajpreet Kaur, very good. Yes. And it's very logical. Chalo, chalo, chalo. Now, understand illustration number 13. A company issued 12% debentures of face value of 10 lakhs and 10% discount. Okay. Chalo, discount kitna hua? 12% debentures, 1 lakh. Debentures interest. See, interest is always payable on face value. So, though you are getting 9 lakhs rupees, so bank account debit 9 lakhs. बैंक में कितना आया? 9 lakhs. But interest has to be paid on face value. Interest has to be paid on face value 30th June and 31st December. 12% on 10 lakhs. So 1,20,000. 1,20,000 per annum. Out of this 60,000 6 months. 60,000 6 months. And all debentures will be redeemed after expiry of 5 years at 5% premium. Premium पे pay करना है. So redemption loss. So loss is 10 lakhs का 5% means 50,000. Loss is 50,000. Okay. So loss is 50,000. Now, see, my total loss 1 lakh plus 50,000. Bank account debit. Understand? Cash comes in. Number 1, 9 lakhs. You have to write at number A. 9 lakhs you have written. Number B, 12% debentures always at face value. And premium on redemption. Premium on redemption. Or debentures redemption premium account. Debentures redemption premium account 50,000. And balancing figure number D, 1,50,000. We already studied this entry. Okay. So this entry we already cover. Now see, on 30th June, what is the entry that you are going to pass? Interest expenditure is 60,000. Yes, sir. 1,20,000 is total interest for per annum, 60,000 for 6 months. So expenditure is 6 months. But out of this, what is the TDS rate? TDS rate was 10%. So 6,000 I will pay to government. It's my liability. And debenture holders are my creditors. Again, liability. 54,000, 6,000. The creditors becomes receivers. So debenture holders 54,000.
liability cancelled by paying government 6,000 temporary account to bank 60,000. Very easy entry, beta. And then again same entry, debenture holder account debit, debentures account debit to debenture holders again at 31st December. Same entry you are going to pass on 30th June and on 31st December. Entries are very easy. Same entry. Then out of 1,50,000, when to redeem it? After yes, beta, after 5 years. After 5 years. So now this is very important entry. Total loss 1,50,000. So 1,50,000 divided by 5. Okay. 1,50,000 divided by 5 will be transferred. Discount credit will be transferred to P&L. And debenture interest is also nominal account expenditure. So transfer to P&L, interest is 1,20,000. So P&L transfer, there are two P&L transfer. One is interest and one is discount. Two nominal accounts, interest and discount. Chalo, recall it. Recall it. Very easy. First entry, bank account debit. Understand, cash comes in. Kitna cash comes in? Don't refer the answer. Kitna cash comes in? 9 lakhs. Two debentures, 10 lakhs. To premium on redemption, 50,000. And then discount account debit, 1,50,000. 1 lakh ka loss, discount 50,000 on redemption, premium on debentures redemption. Second entry. Second entry, interest account debit, 60,000. To debenture holders, 54,000. To TDS payable, 6,000. Then debenture holders, TDS to bank. This liability is getting cancelled to bank, 60,000. Interest open, nominal account, expenditure. Same entry in second half. Same entry in second half. Third half, beta, final entry, P&L account debit to interest, and then P&L account debit to discount. Over. Chaliye. So all entries regarding TDS are clear. You got this concept, beta? Illustration number 13. Here we have finished with the syllabus part. Only last part which remain, consideration other than cash, I covered it. TDS entries I covered. So now everything is completed, beta. Only forfeiture part, I think we need practice. No, beta. Last two entries, yes, you can pass, beta. Himanshu Pathak, एक ही इसमें निपटा डालो. P&L account debit to interest to discount. चलेगा, चलेगा. एक entry भी you can pass, but it's better interest का transfer entry separately and discount entry separately. Okay, you are clear with this concept? So beta, please understand bank account debit discount, how to revise bank account debit, discount account debit to debentures redemption premium. First entry easy. Then interest entry, interest expenditure full 60,000 to debenture holders 54,000 without looking into that, to TDS payable 6,000. Then debenture holders 54,000, TDS payable 6,000, to bank 60,000. Same entry will get repeated again. And then P&L to interest and P&L to debentures holders, discount on issue of debentures. Khatam. All entries over. अरे इजी छे रे, इजी छे. अरे 1,20,000 साल भर का 1,20,000, 60,000 कहां से आया? कौन पूछता है रे? 1,20,000 is per annum. Correct? You are paying it after 6 months. Interest is payable for 6 months, 6 months, 30th June and 31st December. So in year, you are paying it for 2 times. So 2 times means 6 months interest, 1,20,000, 2 times means divide by 2 करने का, 2 बार interest pay किया तो 60,000, 60,000. We know the redemption period. Where is it is given that 5 years? Say beta, after expiry of 5 years. Read the question thoroughly, na.
after the expiry of 5 years. Can we have to calculate interest on only face value? Yes, beta Ekta Tiwari. Interest is always paid on face value. Interest is never. Dividend and interest are paid on face value. 5% dividend means what? Dividend is always on face value. Dividend is always paid on face value, not on issue price. Interest and dividend, both are paid on face value. Any other question? Any other question? Otherwise, I will shift to that last question of once again that Ram and Sham question. So I want to take it once again thoroughly, and then remaining questions are really very easy. So Ram and Sham question we will take it once again, and after that I'm going to leave you. Okay. So एक last question है forfeiture का. So tedious concept easy है. Yes, Jyoti, thank you, beta. Chalo. This question you can do by your own. It's very easy now. Oversubscribe, you have to refund, beta. And interest is paid on face value. So you can do it. It's easy, beta. 1, 2, 3, 4. Now you can do it by your own. Chalo. Issue of shares ka last one. Yes, I am going to take that. And then beta will meet for revisions. चलो एक बार ये बता देता हूं मैं. हाँ, that question I have not taken. ABCD. I will show you the presentation. And see, whenever you are presenting, that part I left. Whenever you are giving shares other than cash or debentures other than cash, shares other than cash, you have to mention it separately. Out of 40,000. So we will take these last two questions. Okay. ILU 16 and 17. We left with this. So we will take this first. And if time permits, Ramsham ki revision lete hain. Nahi to Ramsham ka last session dekh lena. You will get it. Okay. So 16 and 17 question, we'll take it at the end. Chalo. 16 number. Come to 16 number. Have you done beta Ramsham question? Okay. केशव ठाकुर सर, आपकी रोज याद आएगी. पार्टनरशिप से एक रोज शेड्यूल बन गया था कि आपके साथ 1 घंटा रोज बिताना है. वेरी गुड बेटा. चलो 15 दिन आपका नॉन स्टॉप हुआ ना ऑलमोस्ट सेशन. लास्ट मंथ में आपके साथ ही था पूरा. ओके. ठीक है. चलो. A holds, see, A holds 2,000 shares of 10 each on which he has paid only 2 application. Okay. So first I will draw the diagram. 2 on application. B holds 4,000 shares of 10 each on which he has paid application amount and allotment amount. So B 3 rupees. C holds 3,000 shares and he paid 2 on application, 3 on allotment and 3 on first call. So first call is 3. So final call 2 plus 3 plus 3, 3, 3, 6 plus 2. Yes, this is last one is 2. They all fail to pay second and final call of the directors. Okay. And therefore forfeited their shares. Okay. So diagram for A. See the diagram for A. 2, 3, 3, 2. 2, 3, 3, 2. Chalo. 2 के बाद diagram. It's a received and here forfeited. This is the diagram for A. So what is the entry? Equity share capital account debit. How much beta? This diagram for A, 10 rupees. 2 allotment 3. 2 first call 3. 2 second call 2. And if you don't want to pass this entry, instead of this, you can write calls in arrears directly 8. And 2 shares forfeited.
What is the collected amount, beta? 2 rupees. How many shares? 2000 shares. So 2000. So this is 20,000. 6,000. Yes. So beta A का 20,000, 6,000, 6,000, 4,000, 4,000. Same diagram for B. So this is for B now. Two, three, three, two. How many shares, beta? Okay. How many shares he has? 4,000. Equity share capital 10. To first call 3. To second call 2. To shares forfeited 5. How many shares? 4,000. 40,000. 30,000. Sorry, 12,000. Sorry, it's my mistake. 12,000 for first call, 8,000 and 20,000. And now for C. Say के लिए diagram. Again, 2, 3, 3, 2. He paid up to first call and only second call he has not paid. So equity share capital, debit 10 to only second call, 2 rupees, and 2 shares forfeited. 2 shares forfeited, 8 rupees. How many shares he has? How many shares he has? 3,000. So 30,000 share capital, 6,000, 24,000. So now you will combine entry. So you can see total equity share capital. I will draw this. These are your working notes. 20,000 equity share capital, 40,000 and equity share capital 30,000. So 40 plus 30 plus 20, 90,000. You can check here equity share capital एक ही entry में 90,000. Now second one. Now see allotment. Allotment 6,000. Then you do not have allotment. So allotment you can check only 6,000. Yes. Allotment 6,000. Next color. Then you have first call. First call 6,000. B का 12,000. C का 6,000. 12 plus 6, 18. 18 plus 6, 24. So 24,000. Sorry. Oh. It's a second call. It's a second call. Okay. Sorry, friends. Only 2. 12 plus 6. Only 2. First call. 12 plus 6. First call. 18,000. Yes, my friends. 18,000. And second call. Last one. 4,000. 8,000. And second call 6,000. 8 plus 6, 14. 14 plus 4, 18. Again 18,000. Yes, 18,000. And last में जो नहीं color किया, that is forfeiture. So forfeiture 4,000 plus 20,000. 24 plus 24, 48. So correct answer is 48. Now all these shares are reissued at rupees 12. How many shares? 2 plus 4, 6 plus 3, 9,000. So bank account debit 9,000 into 12. Share capital is always at face value 2 and then 10 rupees, and security premium, face value is 10 and security premium is 2.
and whatever balance in capital shares forfeited, that will be transferred to capital reserve 48,000. Are you finding it easy as A, B, C separately and then merge the entry? You can show it in the exam as working notes. And after that, you can pass single entry. Otherwise, ICI chart. Otherwise, ICI का chart. But according to me, ICI के चार्ट से अच्छा हम लोग एंट्रीज लिखेंगे तो ज्यादा इजी जाएगा फॉर प्रेजेंटेशन. Okay. So are you finding it's easy now? Which technique beta? Entry wise? Yes, I will tell you to, I will show you to take my original handwriting बताता हूँ बेटा. My original handwriting. चलो presentation के लिए. You can take a screenshot for 15 number. You can draw these diagrams better. You can take a screenshot. Illustration 16, sorry. Diagrams are very, very important. And then you can combine these entries. If you have hold over this question without writing entries, you can pass directly combine entry. If you have hold over this question better, it's very simple. How to combine entry, that also I will show you. So you can just multiply here by how many shares? 2000 shares ना. फर्स्ट में कितना है मुझे भी याद नहीं. चलो फर्स्ट में 2000 shares. You can combine this diagram here only. 4000 and 3000. See beta. So you can write here allotment में 6000. First call में 6000. I will show you the shortcut combine entry का. 4000 में here you can write only for call scenarios you can write 12,000 और 8,000. And here it is only second call के ऊपर लिखना 6,000. Then you can take allotment का 6,000, first call का 6 plus 12 and second call का 4 plus 8 plus 6. Okay. So directly you will get the answer. Then share capital, total cap shares multiplied by 10, and balancing figure you can show as a forfeiture. Okay. Balancing figure you can show as a forfeiture. So equity share capital 4 plus 2 plus 3. If you want to pass only combine entry, 9,000 into 10 rupees, 90,000. Okay. Then to allotment. To allotment only for first case, 6,000. Then to first call. First call, this 6,000 plus 12,000, 18,000. And to second call, 4 plus 8 plus 6. If you want to save your time in exam. And shares forfeited, you can show it as balancing figure. 90 minus 6 minus 18 minus 18. 48. Only one entry. Okay, if you write amount and you can write combine entry directly by draw this diagram. Okay, working note में diagram आएगा और entry directly की जाएगी. So instead of passing 3 separate entries and then merge it, so I will show only directly one entry. In exam, I can save my time by doing this diagram and by writing amount after first line and before second line. Write amount, take total, and forfeited balance means received amount. Those who are very clear with this concept. And those who are not clear, beta, you can pass 3 separate entries for 3 separate, and you can pass 3 ABC ka separate entries and 1 entry for reissue. Easy che? Which one is better? Separate entries or one combined entry? Which is better one?
Yes beta, yes beta, you can draw this diagram on last page, on rough page, and you can pass entry. और working notes में भी बता सकते हो. You can, working notes can be in the form of diagram. One combined entry easy है. चलो last one, last question of the day beta, last, please last 5 minutes, and then last question. Ilu 17. I already explained you the concept of shares issued for consideration other than cash. So see, X company incorporated with authorized capital only for presentation. 90,000 into 10. The company purchased land and building 4 lakhs by issuing fully paid up equity shares. And the balance beta 4 lakhs ka payable. So it is total 9 lakhs. Usme se balance is 5 lakhs. Then which is subscribed to public. So land and building comes in. Y is our creditor. Same entries beta, Y is creditor, you can write. So land and building to Y, you can now visualize these entries, and Y becomes receiver. Creditor becomes receiver, and issue of shares are 4 lakhs. So land and building account debit to equity share capital. So this is for consideration other than cash, 4 lakh rupiya. And baki remaining bank account debit to equity share application, and equity share application to equity share capital 5 lakhs, 5 lakhs. Now presentation is very important. This is the simple presentation. Bank and tangible, यहाँ पे गलत हो गया, tangible assets नहीं. Here you can change property, plant and equipment. Fixed asset भी word हटा दो. Only property, plant and equipment. This is a wrong presentation. Now after schedule 3 format, so non-current assets we will change it. Don't worry. Non-current assets PPE. Non-current assets PPE. एक सेकंड में भी हमारे फैकल्टी को भेज देता हूँ ये. मैं भी भूल जाता हूँ बाद में. हाँ, so non-current assets beta 4 lakhs, and cash and cash equivalent bank balance. And now see the presentation. Authorized capital 9 lakhs, issued, subscribed and called up capital 9 lakhs. But this will carry beta 2 marks. This out of above, you have to write this sentence. 40,000 shares paid. Yes, you can write in the simple way. Out of above, you can write in this way. 40,000 shares are issued. So break this sentence, are issued for consideration other than cash. Simple sentence. Out of above, 40,000 shares, out of above, break the sentence. 40,000 shares, break the sentence, are issued, break the sentence, for consideration other than cash. Simple. Out of above, 40,000 shares. This will carry 1 mark beta. You have to present it. ये आपको प्रेजेंट करना पड़ता है कि मैंने जो 9 लाख रुपए मिलाया, 9 लाख रुपए का मेरा जो शेयर कैपिटल है, तो उसमें से 4 लाख के बदले में मुझे सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग आया, कैश नहीं आया. कैश नहीं आया तो ये लाइन लिखना पड़ता है. इसका 1 मार्क कैरी होता है. यदि ये क्वेश्चन आता है तो दिस विल कैरी 1 मार्क बेटा, कि आउट ऑफ अबाउट 40,000 शेयर्स आर इश्यूड फॉर 40,000 शेयर्स आर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. Okay, so इसका 1 mark मिलेगा, and here we have completed our syllabus successfully. So thank you guys. I hope you will do your exercise regularly. Exercise means आपका ये जो है रेगुलर ये करोगे. चलो जल्दी से कमेंट्स दे दीजिए. सर अभी तक आपने जो सिखाया है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, वो सब मुझको समझ में आया और उसको पूरी तरह से एग्जाम में यूटिलाइज करूंगा, कोशिश करूंगा. सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हार जा रहा था, बट डोंट वरी, दैट आई ऑल्सो कवर इन अपकमिंग 1 week and I will follow schedules regularly. Thank you for giving best teaching to us, teaching we cannot get in private classes. Thank you beta, thank you. Sir, we have to write this even if it is no beta, it is given in the question balance sheet pro forma. If entries are asked, don't start with balance sheet. Okay, Himanshu Patak ji. Sir, I will miss you very much. Baraktullah ji, thank you beta. Bibhu Pandey, thank you so much sir for your wonderful lecture and time to join the classes. Thank you beta. Miss Khanna ji, sir 15 illustration SS लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है.
15th इलस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट। चलो जाते जाते तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ बेटा। 15th इलस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट यस ले लीजिए। चलो ले लीजिए बेटा, जाते जाते ख्वाहिश आपकी। सर आर यू अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया? बेटा आप टेलीग्राम चैनल थ्रू मुझे कनेक्ट कर लो। The journey from traditional approach to company accounts is amazing. We were like raw material and you crafted us as very well. Yes, finish goods कर दिया मैंने आपको। थैंक यू सर। चैप्टर नंबर 1 का रिकॉर्डेड लेक्चर यस बेटा, कमिटमेंट है मेरी। थैंक यू सर जी, यू आर द बेस्ट सर। चहल सोनी थैंक यू बेटा। बरकतुल्ला का सेम है, ब्रिलियंट टीचर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विच पार्ट ऑफ द थ्योरी शुड आई फोकस? बेटा थ्योरी के लिए आप जो इलस टॉपिक के नीचे, इन टॉपिक के नीचे जो भी लिखा होता है उसको, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए बस, बाकी कुछ भी मत कीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अच्छे से सब कुछ पढ़ाया। प्रिया थैंक यू बेटा। अर्धव, आराध्य विजय जी, आई एम ऑल्सो गोइंग टू मिस यू। आपका आशीर्वाद मेरे से हमेशा ही रहेगा बेटा। सर रिवीजन क्लासेस यस देने की कोशिश करूंगा। अरुण चौहान थैंक यू बेटा। तेजश्री थैंक यू, आई एंजॉयड योर क्लासेस। अंकित मिश्रा थैंक यू बेटा, लवली क्लासेस। भार्गवी आई विल फॉलो योर गाइडेंस यस बेटा भार्गवी। कुमारी पूजा यस, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये इनकी ख्वाहिश है। सर रिवीजन क्लास जल्दी से लेने की कोशिश करूंगा। सर यू थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस बेटा। रेहान जी थैंक यू। ज्योति बेस्ट बेटा थैंक यू। श्रुति मुड़े ICA classes are best because of faculties like you beta, thank you. Anjana, literally sir you are amazing teacher, even thanks for amazing lectures, thank you beta. Goodbye sir, meet you in intermediate, yes I love your teaching. राधिका जी थैंक यू बेटा। ईशान रेशोज बेटा, रेशोज अभी एक बार देख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थैंक यू का मैसेज बोला है। सो मोहन, स्वाति, केशव, लकी, साक्षी, लक्षिता, ईशा, आदिश, जेबा, आई एम गोइंग टू मिस यू ऑल बेटा। यस मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो आप। यस ऑल ऑफ यू, मैं आपके टच में रहूंगा बाय एनी सोशल मीडिया से, आप टेलीग्राम में ये देख लेना। और हम लोग रिविजन्स भी करते रहेंगे, देखते हैं कैसे कर सकते हैं ICA के साथ रिविजन्स, तो उसके बाद मिलते रहेंगे। और फर्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू गिव यू इन द रिकॉर्डेड वन, सो डोंट वरी, वो भी चैप्टर आपको मैं अच्छे से रिकॉर्डेड में पूरे के पूरे यूनिट्स दे दूंगा टू क्लियर योर एग्जाम। फर्स्ट चैप्टर ये हम लोग थ्योरी सब्जेक्ट्स पे, तो थ्योरी हम लोग एंड में देख लेंगे। थैंक यू ऑल, आई एम गोइंग टू मिस यू ऑल। चलो थैंक यू, बाय।